Good afternoon, everyone. I hope you all can hear me and see me clearly. Please write yes in the chat if you can hear me and see me. Great. Thank you for the confirmation. I hope you can hear me, sir. Welcome to the first afternoon session of the week, and today we have Arpit very well sir with us. We'll start with the index outlook, the setup for tomorrow's expiry with Shivangi Sharda ma'am. We'll move towards the BTST and then we'll take up some stock queries if we have enough time. Arpit sir, you are audible, you are visible. We can see your screen and we can start the session. Yeah, just a minute. Just give me a minute. Sure. Yeah. Very good afternoon, guys. So we have seen a very fantastic start to the week, and this is the monthly expiry week for the April series for Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty, Mid Cap Next, and a lot of all the NSE instrument on this Thursday. So first and foremost, the flow for the session would be starting with a standardized Nifty Bank Nifty index outlook, followed by the sectors that have been doing well, BTSC setups, CDI setups, because we have seen a very good breadth across the broader market after a very long time. So लास्ट वीक ऑनवर्ड से एक अच्छा हमने मोमेंटम पिकअप देख लिया था निफ्टी बैंक निफ्टी में, और आज वही इफेक्ट जो रिपल इफेक्ट है वो ब्रॉडर मार्केट में भी इट्स पासिंग ऑन, एंड वी कैन सी since morning the screen is green, and after a long time definitely we can see some happy faces also, because good momentum we have seen across stocks. So first and foremost, starting with the main index, Nifty. So Nifty opened on a positive note, a gap up positive 70 to 80 points, and after a slight dip, good momentum was seen throughout the day towards 24,200 levels approx. एंड सेकेंड हाफ में अगर देखो तो उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज हुआ, कंसोलिडेट करा अपर बैंड पे, बट द गुड पार्ट इज दैट इट इज होल्डिंग इट गेन्स एट हायर लेवल्स. So on the monthly, it has negative formation or lower rise after almost 6-7 months. On the weekly, consolidation breakout above 23,850. On the daily, higher low structures is intact. So जिसने भी पोजीशन जो इंडेक्स में प्ले कर रहे हैं, यू हैव टू सी द प्रीवियस डे लो, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा. आज रहेगा 23,900. सो निफ्टी में हमारा बाइस पॉजिटिव रहेगा जब तक निफ्टी 23,900 के ऊपर रहता है क्लोजिंग बेसिस पे टुवर्ड्स 24,200 जो पहले था, वहां से हमने थोड़ा सा कूल ऑफ देखा. नेक्स्ट लेवल आता है 24,444 एंड देन पोजिशनल सेटअप 24,800. सो ओवरऑल निफ्टी बायस इज पॉजिटिव जब तक 23,850 के ऊपर क्लोजिंग रहती है निफ्टी में. अब बायस वुड बी पॉजिटिव. Having said that, last if I see the chart from its last 7 to 8 day sessions, एक ऑलमोस्ट 10% की हमने रैली देखी है निफ्टी की लोअर से 22,000 से लेकर ऑलमोस्ट 24,200 तक का. सो डेफिनेटली you the risk reward will not be that attractive at this junction on the index front, but yes, for the intraday players आप immediate basis पे देख सकते हैं 24,000 का लेवल. पोजिशनल प्लेयर्स 23,850. सो 23,850 निफ्टी में मेजर लेवल है. ऊपर में 24,444 and then 24,800 will be the positional target for Nifty. Now talking about the master blaster, that is the Bank Nifty index, and here on we have seen new life highs, and in fact Bank Nifty were quite gung-ho from last almost 10 to 15 days. जैसे ट्रेड टैरिफ्स के वहां से हमने जो रिकवरी देखी बैंक निफ्टी में, वी हैव सीन अ वर्टिकल रैली ऑफ ऑलमोस्ट मोर देन 5,000 प्लस पॉइंट्स. आज बैंक निफ्टी नए लाइफ हाइज मारे हैं टुवर्ड्स 55,000 almost 500 levels. And talking about bank nifty, हम last week में भी हमने suggestion दिया था bull call spread का. I remember the last session that we discussed about to play that swing. So definitely guys, अच्छे profits उसमें बने हैं, maximum profits हुए. So guys keep booking profits. It's very important. Options में आप direct option करें या option strategy करें. So keep booking profits. Now talking about the bank nifty level, post the outcome of ICICI HDFC Bank numbers. So obviously we have seen a rally of 1,000 points. Followed by आज कोटक और एक्सिस में एक अच्छा मोमेंटम है. And here on our view is that Bank Nifty overall bias would be positive, and banking stocks within that sector में हमें stock specific action दिखेगा, because अच्छी खासी रैली हुई है Bank Nifty में, almost of 4,500-5,000 points in last 7 to 8 sessions. So from here on consolidation would be there. Immediate basis पे जो Bank Nifty का previous lifetime high था 54,500 levels,
I'll take you on to the weekly chart. थोड़ी रेंज बड़ी रहेगी बिकॉज वी हैव सीन वन वे रैली इन द बैंकिंग इंडेक्स, सो डेफिनेटली थोड़ी से रेंज हमें ब्रॉड अप प्ले करना पड़ेगा. सो पहले एक लेवल था 54,000 के अराउंड 54,467. सो राउंड फिगर 54,500 वुड बी द इमीडिएट सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी. जब तक 54,500 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा, अब बायस वुड बी पॉजिटिव. At the same time, upside में 56,000, 56,500 will be a positional target. But year on, थोड़ा सा हमें लग रहा है कि consolidate करेगा before start its next big up move. So index में Nifty Bank Nifty दोनों ही strong uptrend में है. But after a sharp up move, थोड़ा सा consolidation possible है before starting in next leg of rally. In between, stock specific action काफी बढ़िया रहेगा. Result seasons already चल रहे हैं and काफी अच्छे results आए selective counters के. थोड़े sectors के underperform भी हुए. But having said that, good part is that mid cap, small cap is also participating. Coming on to our greed and fear indicator, that is India VIX. So if I pull out the chart of India VIX, weekly chart में comfortably lower band पे trade कर रहा है. Daily chart भी हम देखें overall. So after a sharp dip from 6 to 7 days, India VIX is falling lower highs, lower lows from last 6 to 7 sessions. So comfortably between 14 to 16 की रेंज में ट्रेड कर रहा है. जब तक 16 के नीचे है, तब तक का बायस would be positive on buy with a buy on dip stance. Now talking about few stocks that are looking very strong. First would be from the chemical and fertilizer pack. I'll focus on 2 to 3 CDI calls first because broader market में काफी अच्छा मोमेंटम है. आज हमारी टेक्निकल टीम ने भी 4 वीकली प्रोडक्ट में couple of ideas दिया. तो फर्स्ट इज यूपीएल. सो यूपीएल का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो क्लासिकल अप ट्रेंड में है विद इन द सेक्टर आउट परफॉर्मेंस. सो यूपीएल वीकली स्केल इज स्ट्रांग, डेली स्केल पे हायर उसका स्ट्रक्चर इंटैक्ट है. ऑलमोस्ट पिछले 15 से 20 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दे रहा है 660 के ऊपर. एंड आई थिंक क्लोजिंग अबाउट 660 कैन डेफिनेटली ट्रिगर टुवर्ड्स शार्प मोमेंटम टुवर्ड्स 680 690 लेवल्स तक का. सो यूपीएल वुड बी अ फर्स्ट सीडीआई कॉल. अभी चल रहा है 667 के अराउंड. 664 से 667 की रेंज में बाय कर सकते हैं. 635 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 700 के टारगेट के लिए यूपीएल वुड बी अ फर्स्ट सीडीआई कॉल. आई होप द लेवल्स आर क्लियर. अनुज? Yes, sir. We're just sharing it in the chat as well. Yes, perfect. Apart from that, if we talk about the flavor, the banking flavor has been and the NBFC flavor has been very much strong, and we would like to stick with the heavyweight, that is Bajaj Finance. So अगर सेटअप वाइज भी हम देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग है. स्लोली स्टेडीली अपना बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो ही रहा है. एंड गोइंग फॉरवर्ड आल्सो वी एक्सपेक्टिंग दैट ये धीरे धीरे 5 डिजिट फिगर में आ सकता है with a time frame of 2 to 3 months time frame. इमीडिएट बेसिस पे 9,550 एक टारगेट है जो हमें लग रहा है कि आ सकता है सेटअप के हिसाब से बिकॉज पूरा एनबीएफसी फ्लेवर में. सो बजाज फाइनेंस वुड बी फ्रॉम द एनबीएफसी पैक. सेटअप वाइज वीकली स्केल पे अगेन रीटेस्ट ऑफ ब्रेकआउट, रेंज ब्रेकआउट, डेली स्केल पे हायर लोस का स्ट्रक्चर इंटैक्ट, लोअर हाइज नेगेशन, trading in life high territory. Slowly steadily you can see move towards 9,500 levels. So Bajaj Finance also looks good. स्टॉप लॉस रहेगा 9,050 का, ऊपर में 9,500 के टारगेट के लिए. So UPL and Bajaj Finance are the 2 CDI calls as of now that we are giving for a couple of days time frame. As we are discussing, one BTSC idea that we have flashed on terminal is NCC. So आज देखें तो काफी stocks में हमने अच्छा pull back देखा है. And there are 2 kinds of setups that are happening. वो एक तो bottom fishing जो है reversal candidate है weekly scale पे, और एक है uptrend में. So NCC जो है वो lower time frame वो weekly scale पे lower है, इसको negate किया है. Range breakout दिया 219 के ऊपर. And slowly steadily you can see a good move towards 230 to 32. So NCC is a first BTSC trade. अभी 223 चल रहा है. आप ये लेवल पे बाय कर सकते हैं. 218 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 232 के टारगेट के लिए एनसीसी वुड बी फर्स्ट बीटीएससी ट्रेड. We have shared the trades, guys. You can check the pinned section. So any index trade if possible.
Yeah, so the thing is, overall, if you see, as you're discussing about Nifty, Bank Nifty, and also if I look at the Sensex chart also, अच्छा move होने के बाद थोड़ा सा consolidate हुआ है. So our advice would be current junction, whatever move you have played so far, this junction is better to book profits in index trade. And कल Sensex की expiry है, so Sensex की expiry को अगर आपको move play ही करना है, तो भी आप बुल कॉल स्प्रेड के थ्रू उसको प्ले कर सकते हैं. आई विल चेक अप ऑन द लेवल्स, क्या रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बैठ रहा है, देन आई विल अपडेट ऑन दैट. बट सो फार निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में दोनों में ही अच्छा मूव आ गया है. एंड फॉर द इंट्राडे बेसिस प्योरली आई एम टॉकिंग अबाउट current junction, the risk reward is not favorable as of now because there is no major setup as of now on the more bullish side for the immediate intraday basis. But definitely from a positional or for tomorrow's perspective, if we get any trading opportunity, we'll update on that. We are focusing on the Sensex trade also because tomorrow we have Sensex expiry. बट ओवरऑल सेटअप वाइज अगर हम देखें, सो थर्सडे मंथली एक्सपायरी फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी, बाइज वुड बी पॉजिटिव, बुल कॉल स्प्रेड्स के थ्रू ही प्ले कर सकते हैं. उसके लिए भी हम अपडेट करेंगे एज पर द सेटअप वाइज. इन द मीन टाइम व्हाट वी कैन डू अनुज, वी कैन टेक फ्यू स्टॉक क्वेरीज and in the also along with that I'll try to look at the strikes for the Sensex that we can play it out for tomorrow's expiry. So we'll update on that and we can take few stock queries in the meantime. Sure, sir. So CDS took a short-term target. Can you please explain? CDSL? Yeah, CDSL. Short-term target. So good. Again, we have seen some flavor back in the exchanges and the exchanges platform stocks. And if you see CDSL, a classical range breakout on the daily and the weekly scale after almost many weeks. So I think एक बेस फॉर्मेशन हो गया है सीडीएसएल का डेली स्केल पे, ट्रिपल बॉटम का ब्रेकआउट आ गया है 1250 के ऊपर. स्लोली स्टडी द स्टॉक कैन हेड टुवर्ड्स 1330 1350 लेवल. सो ओवरऑल बाइस पॉजिटिव है. 1260 के स्टॉप लॉस से आप 1350 के लिए ये मूव को प्ले कर सकते हैं. Sir, Arpit, sir, is it the right time to buy HDFC at the current market price? HDFC Bank, if I just go back to history of this chart, the question first would be, if you're buying from a 1 to 2 day perspective, the risk reward will not be favorable. But if you're buying from an investment perspective, that would last for 6 months to 1 year perspective, definitely it would be a buy. Almost after a last almost 3.5 year consolidation breakout दिया है. Let me pull up the monthly chart for better conviction and for better understanding. So after almost last 2 to 3 years की consolidation breakout दिया 1800-1850 के ऊपर. And I think setup wise, overall positionally we expecting that from next 6 months to 1 year perspective, the stock can head towards 2000 and 2100 levels. So from an investment perspective, definitely can buy. From an immediate trading perspective, better to wait. थोड़ा सा dip आएगा around 1910 1900 level तक का, वहाँ पे आपको ऐड करने की सलाह है. Sir, a view on Concor. कंटेनर कॉर्प जस्ट या कंटेनर कॉर्प का हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें, सो वीकली स्केल पे धीरे से स्टॉक ने थोड़ा सा मोमेंटम पिक अप किया है. डेली स्केल पे भी हायर राइज बनाया है. वीकली स्केल पे पिछले 3 हफ्ते हायर लोस का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है. 730 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है. 730 के ऊपर निकल जाता है तो एक बार शॉर्ट टर्म बॉटम बन जाएगा. 730 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर ही नई तेजी होगी टुवर्ड्स 750 770 लेवल्स तक का. सो 730 वुड बी अ क्रूशियल लेवल. And as we're discussing, overall bias positive for Nifty, Sensex and Bank Nifty. So let me just pull up the chart for Sensex also. Yeah. So overall setup wise, so Nifty and Sensex has almost 97% correlation. And to play the uptick, because today what you have seen after good up move, there has been consolidation. So similar way, we'd like to go with the bull call spread in the Sensex also. Right now Sensex is around 17,400, and to play the uptick for tomorrow's expiry, one can go with bull call spread, जिसमें आप 17,500 का कॉल बाय करेंगे, 17,800 का कॉल सेल करेंगे. अराउंड 70 to 80 पॉइंट्स की कॉस्टिंग में मैक्सिमम रिवॉर्ड रहेगा 200 पॉइंट्स का. दिस यू हैव कीप इन माइंड दैट यू आर प्लेइंग इन बुल कॉल स्प्रेड विद द ओवरनाइट. सो आपका जो रिस्क है वो कैप है, प्रॉफिट्स भी कैप है, बट दिस इज द बेस्ट वे टू प्ले द अपटिक एंड अपस्विंग इन द मार्केट.
So I'm just repeating the trade. Bull call spread, buy Sensex 79,500, sell Sensex 79,800, combined premium 70 to 80, target 200 overnight. So this is through a strategy, and also I would like to mention about how strategy plays a very important role. So for example, in Bank Nifty particularly, in last 7 to 8 days, if you have seen, we have seen big up moves, and few of the moves were big up move overnight. For example, today's up move was overnight. A couple of days back, the up move was overnight. And when we play with a directional strategy in which our risk are capped and profits are also capped, but it is well defined, the best way to play this directional trade is through option strategy. And from last couple of weeks, I've been recommending these similar strategy setups, especially for Bank Nifty, because Bank Nifty was relatively outperforming, and this we can clearly see where majority of the indices are 8 to 10% low from its all-time high. Bank Nifty is leading from the front. Fin Nifty is at already life highs. Bank Nifty is also at today made a new life highs. So it's very important to understand how to play through strategy in particular instrument when there is a direction in the market. And in spite of volatility cool off overnight also after a 3-day gap, we were able to make profits in that. So this is how generally the position sizing should be. अगर naked option आपने लिया है and in case there is flat opening or negative opening, so the risk is definitely high, and this is the advantage that we generally play through bull call spreads or bear put spreads, especially index trades. Coming back to the stock setup, so we have shared two CDI calls, one BTST, and for the Sensex we have shared the expiry, the strategy bull call spread for tomorrow's expiry. Having said that, result season is on, so stock specific action would be very much in the action, and setup wise, a lot of stocks are in action. We have seen very good momentum also, so try to make the most of it and play the swing through that, because such markets after a long time we are getting a good breadth across the mid cap and small cap indices. So try to play the most, and also understand sectors are very important to play the rally. So we have to understand which sectors are outperforming. So the sectors that we have been touching upon from last couple of weeks is the financial pack, selective consumer stocks, selective exchanges, consumer stocks such as the hotel space, the aviation space, the metal pack. However, at the same time, IT, pharma has underperformed. So chemical fertilizers and banking has outperformed, whereas the broader market, pharma, IT has underperformed. So sector specific approach बहुत important है. जब भी market में तेजी होती है, हमें वो play करने के लिए. Also, chemical fertilizers हमने already share कर दिया UPL. But apart from that, SRF, Chambal also looking good within that space. So you have to play as per the sector specific wise. Overall bias is positive for all the three indices. And India VIX is cooling off. That is a good sign. Tomorrow we have Sensex expiry. Then Thursday we have Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty expiry. So definitely swings will be there. We'll get ample opportunities also. So play the swing accordingly. Sir, your view on Angel One? Angel One, I think they've come out with their numbers, and I'll just look at the chart because, yeah, in spite of the numbers wise, the stock setup wise, it is holding well at higher level. Intraday basis, if we see, it is on the verge of its consolidation breakout above 2500 levels. तो पिछले काफी बार से बार 2500 के वहां पे ही वो अटका है. सो आई थिंक इस बार 2500 की क्लोजिंग के ऊपर ये अच्छा मूव देख सकता है टुवर्ड्स 2650 लेवल्स तक का. So Angel One setup wise 2500 is the immediate hurdle zone. 2500 की क्लोजिंग के ऊपर जल्दी हमें 2650 तक के मूवमेंट दिख सकता है. इमीडिएट बेसिस पे 2380 का सपोर्ट है. Guys, we can't comment on Motilal Oswal because of the compliance guidelines, so we won't be taking up queries around MFSL. Sir, Eternal 235 call bought at 3.4. Sorry, can repeat it? Eternal, ETERNAL. Yeah. So the name of the company has changed. Yes. So what is that? That call has been bought, right? 235 call at 3.4. Okay. So first and foremost, as we're just couple of days ahead of its expiry, if it is this month call, so looking at the premium, it would be for this month call. Immediate basis 230 is a support for this counter. We have just couple of days left, so there would be two choice better. या तो आप इसको exit कर सकते हैं और उसको आप next month के call में shift कर सकते हैं. That would be a better thing. Level wise की अगर बात करें तो 230
230 एक इमीडिएट सपोर्ट है जोमेटो का, एटर्नल का, जब तक ये इसके ऊपर है तब तक बाइस विल बी पॉजिटिव टुवर्ड्स 240 to 42 levels. So first thing, you can shift to the next monthly option, that would be better, so you'll have more time factor with you. And in terms of level wise, जब तक 230 के ऊपर है, अब bias would be positive towards 240 242 levels. So Tata Tech for 2 to 3 days. Tata Tech, overall the counter is in downtrend. In spite we have seen good bounce back from the lower levels. Setup wise, we would still avoid, because generally such counters are kind of a bull trap in which there is certain bounces there that we see, but again the stock sees some selling pressure at the higher levels. So from a positional perspective, the counter is in downtrend. जब तक 720 730 नहीं निकलता है तब तक counter का जो trend है negative है. So better to exit on bounce as soon as we see a bounce towards 690 700 levels. Sir, you view BEL BEL अभी buy कर सकते हैं या wait for any specific level? So ओवरऑल PSU इंडेक्स के बारे में बात करें, CPSE PSU इंडेक्स के बारे में बात करें, तो थोड़ा सा हमने मोमेंटम वापस देखा है. एंड इफ यू टच अपॉन BEL चार्ट स्ट्रक्चर, ओवरऑल काउंटर एक रेंज में है. देयर आर बेटर स्टॉक्स विद इन दिस सेक्टर. सो आई थिंक अभी रेंज वाइज को प्ले करना है. सो ऊपर में 232, नीचे में 218 का रेंज है. सो सेटअप वाइज कंसोलिडेटिव है. आई वुड स्टिल सजेस्ट दैट बेटर गो फॉर अदर काउंटर्स. As we're discussing, so one more counter that comes to our mind to play through the sector approach is the defense sector. And defense sector has been one of the most talk sector in last 6 to 8 months. काफी हमने मोमेंटम देखा है, काफी स्टॉक्स में हमने प्रेशर भी देखा था, बट एक अच्छी रिकवरी हमने देखी थी. So I think from the defense pack, as we're discussing, HAL is one of our top pick within the defense pack. And it's also already open in our CDI call also. So overall monthly पे एक अच्छा बॉटम बन गया है अराउंड 3600 तक का. वहां से एक अच्छी रिकवरी हमने देखी है. इमीडिएट बेसिस पे 4100 का सपोर्ट है. ऊपर में 4500 4600 तक के मूव दिख सकते हैं. सो आई थिंक बेटर शिफ्ट योर trading capital to your HAL within the defense pack. That will definitely help you to generate alpha returns. So you own HAL? Yes, as we just talk about HAL itself, that is HAL itself. So हमने just वो level share किए. Bias overall positive है. 4150 का support है. ऊपर में 4500 4600 तक के move दिख सकते हैं. Coming back to the index setup wise, so Nifty consolidation breakout, but अगर हम daily chart और intraday chart देखें तो एक range bound है. पर अच्छी बात यह है, जो हमने लास्ट ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने में हम देखे, बार बार निफ्टी 23,800 23,900 तक आता था, वहां से सेलिंग प्रेशर शुरू हो जाता था. इस बार उसने सस्टेनली 24,000 को निकाला है. अच्छी बात है, इसको होल्ड किया है. तो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग reading and strong chart setup that clearly indicates that this time the intensity is relatively better and the up move is supported by the broader market participation. So that is another healthy sign that market is looking out for. बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, सो आज सुबह की टिक के बाद देयर इज नो मेजर ऑप्शन बाइंग सेटअप्स, बिकॉज धीरे धीरे थोड़े से प्रीमियम कूल ऑफ हुए हैं. बट बैंक निफ्टी इज आल्सो होल्डिंग एट इट्स लाइफ हाई टेरिटरी, सो दैट्स अ वेरी गुड साइन फ्रॉम द both the indices. So setup wise both are positive, but as of now second half थोड़ा से कंसोलिडेशन में चले गए. सो बेटर टू वेट फॉर फ्रेश अपॉर्चुनिटीज. एंड अगर मोमेंटम प्ले करना है फ्रॉम अ पोजिशनल वाइज, यू कैन प्ले थ्रू बुल कॉल स्प्रेड्स दैट वी हैव ऑलरेडी रेकमेंडेड. Trade wise में 2 to 3 trades we have given. One is UPL from the chemical fertilizer space. Second is Bajaj Finance from the NBFC pack, and one BTSC, that is NCC, that we have shared so far. I think there is some technical glitch. Yeah, I think there is some Federal Bank. Okay, yeah. So another mid-cap private stock from the private bank space. So chart setup wise, another range breakout on the weekly scale above 198 levels. Slowly the stock can head towards 205 208 levels. So bias positive because the sector is in flavor and it's dominating, and strong command is seen across all the counters. Immediate support है 198 का. धीरे धीरे हमें 208 210 तक का मूव दिख सकता है काउंटर में. Sir, M&M?
M&M, if you see overall auto pack, we've seen some bounce back, and chart setup wise, if we see broadly एक रेंज ब्रेकडाउन हमने देखा था लास्ट वीक में, बट वहां से वापस एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देख ली है. सो ओवरऑल अभी भी रेंज में है. इमीडिएट बेसिस पे 2700 का सपोर्ट है, ऊपर में 2850 का हर्डल है. सो एक रेंज बाउंड काउंटर है. ओवरऑल ऑटो सेक्टर इतना फ्लेवर में नहीं है. सो अगर आप कन्विक्शन वाइज बोले, सो दैट इज द सेटअप वाइज इज न्यूट्रल. There would be better opportunity within this sector, or you can move to better sector. Level wise में 2700 का सपोर्ट है, ऊपर में 2820 और फिर 2850 का हर्डल. So data patterns. Data pattern, it was seeing good momentum in last week, but let me have a look at the chart once again. So on the weekly scale, kind of a double bottom pattern around almost around 1350 levels, and from there we have seen very sharp rally towards 1950 levels. And generally such counters we see very sharp up move and down move both ways. तो सेटअप वाइज 2000 तक का एक जो मूव था वो ऑलरेडी आ चुका है. फ्रेश तेजी होगी 2000 की क्लोजिंग के ऊपर टुवर्ड्स 2200. सो डेटा पैटर्न वुड बी मोर फेवरेबल अबव 2000 क्लोजिंग, क्योंकि 2000 का जो लेवल था वहां से सेलिंग शुरू हुई थी. तो इस बार 2000 की क्लोजिंग के ऊपर हमें मूव दिख सकता है टुवर्ड्स 2200 लेवल तक. Sir, your view on BSE? BSE, one of the favorite counters for the traders and from the long-term players. Clear uptrend, sharp fall we have seen in last couple of months, but very strong recovery from the lower levels, and the stock is back at its trading life high territory. A fresh range they got on the weekly scale, on the daily scale above 6000 levels. Higher high structure intact on the weekly scale. So स्टॉक का बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है. 5500 से शिफ्ट होकर 5800 850 हो गया है. पोजिशनली हमें 6500 6800 और 7000 तक के मूव दिख सकते हैं. तो जब तक 5900 950 के ऊपर है काउंटर, द बायर्स विल बी पॉजिटिव फॉर न्यू लाइफ हाई. So Suzlon? Suzlon counter overall, as you've seen some recovery in the small cap index. Suzlon also seeing some recovery from the lower levels, but overall एक रेंज में अभी भी फंसा है. पिछले काफी टाइम से 60, 62, 63, 62 के लेवल्स को जो सरपास नहीं कर पा रहा है. इस बार सेटअप के हिसाब से हमें लग रहा है कि मोमेंटम आ सकता है, बट वील वेट फॉर क्लोजिंग. तो 62 एक इंपॉर्टेंट हर्डल जोन है. 62 की क्लोजिंग के ऊपर हमें जल्द ही 70 तक का लेवल दिख सकता है. तो 62 का आप ध्यान रखिए. 62 की क्लोजिंग के ऊपर हमें जल्दी 66 70 तक का मूव दिख सकता है. ओवरऑल बाइस पॉजिटिव है, बट नियर इट्स हर्डल जोन, सो बेटर टू वेट एंड एंटर ओनली अबाउट 62 levels. So as you're discussing, Anuj, we can take one or two more stock queries, and then Sure. I can just summarize things and then we can move forward. Thanks, sir. We'll have this last query. BSE November 2020 price was 260, now 6000. Yeah, so the question is, okay, they have no, not I think written anything. no problem. So maybe whatever the thing is, so this is a classical example of how the wealth has been created in last 4 to 5 years, and there are few sectors that has created enormous wealth in the Indian equity market, and there would be going forward also a lot of sectors and a lot of stocks that will be keeping and creating wealth. So as we don't have any specific question to that, I would like to summarize things with it. On the index front, Nifty major support will be around 23,850. Positionally, immediate basis 24,000 would be a psychological support. Upside में 24,200, 24,444 and positionally 24,800 तक के लेवल्स हमें दिख सकता है. Bank Nifty at life high territories. Previous जो high था 54,500, that would be a major support zone. Upside में trading at life high territories towards 55,500, 56,000, 56,500. So Bank Nifty में stock specific action ज़्यादा expected है within that index front. Bias is positive जब तक ये उसके ऊपर ट्रेड करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी. सेंसेक्स के भी हमने ऑलरेडी स्ट्रेटेजी शेयर कर दी है. Tomorrow we'll have Sensex expiry, so definitely we can see good momentum tomorrow as well. And I think overall a good market setup is favoring the bulls. So I hope this momentum continue towards the April series. So that's all from our side. Thank you, everyone. Thank you, Arpit sir. Tomorrow's expiry session we'll have Shivangi ma'am with us, and today we have a commodity expiry session at 6 p.m. So don't forget to join in. I'll be here with you waiting for the same. Thank you, everyone.